approach to research in social science, conceptualization and methodological intervention. It is a 6 months long course, July 2020 to December 2020, and this is organized by Savitribai Phule Mahila PG Mahavidyalaya Sikar in association with knowledge partners Pandit Deen Dayal Upadhyay Shekha University Sikar, Government Arts College Sikar, Department of Geography Government Lohia College Churu. Today we have very eminent geographer, a social scientist, Professor Jamir with us. She is Nagaland and definitely we will enjoy this lecture because this lecture is in connection with the yesterday's lecture. Again, we are talking about the formulation of hypothesis today in this entire session. For the previous lecture's report presentation, I request first Monica Bistranjan to present the report in English. Dr. Monica Bistranjan. Thank you, sir. Good evening, everyone. The 14th lecture of the Research Methodology Online course was organized on Sunday, 13th September 2020. The lecture was delivered by Professor H.N. Mishra on the topic titled Research Questions, Objectives and Hypotheses. The session was coordinated by Dr. Jitendra D. Soni, who introduced the participants. Professor Mishra has discussed about the objectives, research questions and hypotheses and their importance in social science research. He started his lecture with a Mangalacharya, very important to search the truth, and research is the way to understand the knowledge. To do a good research, one should have curiosity along with humanitarian concern seeking knowledge. He further talked that this research is a journey to know what is undiscovered or unexplored. There are social science research which we are discussing in this lecture. He informed that scientific knowledge has three essential components. One, empirical observation, and third, attaining a scientific knowledge with certain set of rules, procedures, and characteristics. Professor Mishra, the type of that is broadly fundamental and non-fundamental research. He outlined the basic features of the fundamental and non-fundamental research. He further explained the hypothesis of the research study, which he said that it is the first step of a research. Formulating a hypothesis is a process of identifying the gaps in the existing knowledge. To formulate a hypothesis, he argued that it is important literature and conceptual hypothesis is important for both qualitative and quantitative research. He stated that the purpose of hypothesis is the way to identify the variation or no variation between variables. He emphasized that the formulation of hypothesis is based upon the nature of the data, and there are four types of data. There are two types of hypothesis, that is null hypothesis and alternate hypothesis. He also discussed the non-directional and directional hypothesis in research. The types of methods will be used in the study. Thereafter, one should decide to choose the right procedure to test the hypothesis from the chi-square test, t-test, f-test. Professor Mishra further scientific approach used in the data collection will lead to the good social science research. Then he discussed about the building of models, conceptualization of theory and approaches used in the social science research. There are three types of models: iconic, analog, and symbolic. He explained that iconic model is based on replication, whereas in analog it is duplication, and in case of symbolic one can use the equation or it is a short presentation of the research. He reiterated that a researcher should have deep understanding of the methodological approach, knowledge of literature, and high level of curiosity during
data. Lecture where he told that objectives are nothing but they depend upon the broader objective of your research. Objectives explore the scope of your study, and in case of the research, one to explore them. Science research should be taking place under certain time frame and availability of resources. To conduct a research, one should focus on both physical and cognitive environment. Here, social covered under physical environment, whereas the mental strength or ability to understand the other person or society is considered under cognitive environment. He highlighted the importance of indigenous knowledge as well as scientific knowledge to social science research. The foundation of indigenous knowledge and grasp of modern knowledge will help us to see the ultimate truth. Finally, he talked about the larger interest of the research, which lies in the welfare of the society. At the session, the participants raised their doubts, queries, and questions before him. Some of the important questions raised were related to the queries of formulation of hypothesis, test of hypothesis, quantitative and qualitative research. They clarified their doubts and gave suggestions for the critical understanding in their area of study. Finally, the session was concluded with a brief highlight of the discussion provided by Dr. Jitendra D. Soni. The session was closed with a formal vote of thanks by Dr. Munesh Kumar to the speaker, members of the organizing committee of this online course, and the participants. Thank you. Thank you, Monica. You have beautifully summarized yesterday's lecture. And now for the report presentation in Hindi, I request Renu Bagadia to present the report in Hindi. Good evening to all. 13 सितंबर 2020 को आयोजित किए गए व्याख्यान का विषय शोध में उद्देश्य, शोध प्रश्न तथा कल्पना रहा, जो प्रोफेसर एच करते हुए उन्होंने अपने व्याख्यान की शुरुआत मंगलाचरण से करते हुए बताया कि चारों ओर शांति बनी रहे। उन्होंने बताया कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए मानवीयता, उत्सुकता और जिज्ञासा होना आवश्यक है। शोध अज्ञान से ज्ञान की ओर की यात्रा है। उन्होंने बताया कि शोध वैज्ञानिक ज्ञान को प्राप्त करने की क्रिया है जो आनुभविक प्रेक्षण से आती है, जिसके लिए एक निश्चरण में विभक्त करते हुए आधारभूत व गैर आधारभूत शोध के बारे में बताया। आधारभूत शोध सार्वभौमिक व दीर्घकालीन उपयोगिता को बताता है, जबकि गैर आधारभूत शोध किसी समस्या के समाधान के लिए अल्पकालिक काल के लिए बताया जाता है। फिर उन्होंने शोध की आवश्यकता व महत्व को किस तरह किया जाता है, इसे बताते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि सबसे पहले किसी समस्या के प्रति संवेदना होती है, फिर एक धारणा होती है, साहित्य समीक्षा की जाती है तथा परिकल्पना का निर्माण किया जाता है। परिकल्पना सामाजिक विज्ञान में शोध का प्रारंभिक बिंदु है, जबकि साहित्य में यह शोध समाप्त होने के बाद आती है। परिकल्पना संबंध, अंतर तथा भिन्न खोजना है। ये नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो डाटा पर निर्भर करता है। परिकल्पना दो प्रकार की होती है, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसके बाद परिकल्पना की जांच की जाती है, जिसमें काई स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट, डक टेस्ट सम्मिलित किए जाते हैं। प्रोफेसर मिश्रा ने फील्ड इमर्सन तकनीक के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि उचित वैज्ञानिक शैली से आंकड़ा संग्रहण करने पर एक अच्छे शोध कार्य का निर्माण होता है। इसके बाद उन्होंने मॉडल निर्माण के महत्व को बताया, जिसमें आदर्शात्मक मॉडल, एनालॉग मॉडल तथा प्रतीकात्मक मॉडल सम्मिलित है। तत्पश्चात प्रोफेसर मिश्रा ने शोध विधि तंत्र और शोध विधियों के मध्य अंतर होते हैं। प्रोफेसर मिश्रा ने अंत में पारंपरिक तथा आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में व्याख्या प्रस्तुत करते हुए बताया कि शोध का उद्देश्य समाज और मानवता के कल्याण के लिए होना चाहिए। प्रश्नोत्तर सत्र के बाद कार्यक्रम की समाप्ति की गई। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद रेनू। कल भी आपने रिपोर्ट प्रेजेंट की थी, बहुत ही शॉर्ट समय में तैयार की और उसे प्रेजेंट किया। आज पुनः हमने आपसे आग्रह किया और आपने हमारे आग्रह के अनुसार आज रिपोर्ट की। मैं तहे दिल से तुम्हारा धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ रेनू। और आज रिपोर्ट जो राइटिंग है शुभेंदु मुखर्जी करेंगे। और यहाँ मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट करूंगा कि यदि कोई भी पार्टिसिपेंट ये चाहता है कि हम भी रिपोर्ट राइटिंग और हम रिपोर्ट प्रेजेंट करें, तो आप लेक्चर सुनिए, उसकी रिपोर्ट तैयार करिए और रेनू मैम को आप रिपोर्ट भेज दीजिए। यदि आपकी रिपोर्ट अप टू द मार्क हुई तो निश्चित रूप से हम आपको मौका देंगे
क्योंकि ये कैपेसिटी बिल्डिंग की है। हमारी टीम बहुत सारे यंग स्कॉलर्स हैं, they are getting opportunity and they are polishing their skills. So at the same time, participants are also now the family members, so they can also come in the forefront, and they can also present the report. So this will give them a new opportunity to learn the entire these things in a different way. And now for the moderation of today's lecture, I request Renu. Renu Punia will. Thank you, JD sir, and welcome all the participants. Today we have a very wonderful woman and a dynamic geographer with us as a speaker in the today's session, and she will speak on formulation of hypothesis, a little bit that kind of topic, which is one I can say that which is must topic to all the researchers and the students who are want to research in a particular topic. So in a very brief, first of all, I can say that introduce the speaker to all the participants. Today we have Professor Wangshimenla Jamir from Nagaland University, Lumani, and she is professor in Department of Geography. Your area of specialization, ma'am, is in physical and human geography, application of remote sensing and geographical information system, in natural resource management and human resource development. Ma'am once wrote 5 books, especially she has interest in forest area and resource development area. So her books is on Forest Atlas of Nagaland, the AOS of Nagaland, Forest Cover of Nagaland, first and second edition, Regional Migration and Development in India, that is an edited book. She has also a lot of number of publications and completed so many research projects also, which is sponsored from Ministry of Environment and Forest, New Delhi. The project entitled Forest Resource in Nagaland, Department of Science and Technology, New Delhi, that entitled Operation of Permanent GPS Station in Nagaland, Lumani. Then NESAC, NESEC, Department of Space ISRO sponsored project, Shillong, Meghalaya. That project is entitled as Special Distribution of Bamboo and Estimation of Bamboo Biomass in Mokochung and Wokha district of Nagaland using geospatial techniques. And the last one is Ministry of Earth Science New Delhi project entitled Monitoring of Permanent GPS Station in Lumani, Nagaland University. Ma'am, you are such a divergent and diligent researcher also. So I submit my heartfelt welcome to you. So ma'am, now I'm deadly sure that each and every participant who is joined here will be benefit a lot from you. So ma'am, now it's over to you, and once again, a heartfelt welcome to you, ma'am. Thank you. Thank you. Yes, very good evening to all the members, as well as the special thanks to the organizer of Savitri Pai Pulyali Mahavidya Sikar Rajas for giving such a privilege or such a platform to be a part on your orientation on the conceptualization and methodological intervention, which is a months-long program. I feel so proud that I'm also a part or a team with you. Today we have this as been assigned. I have formulation of hypothesis. So I hope you can hear me. Yeah, ma'am. You are audible. Okay. Yeah. And how about the yeah, screen? It's formulation of hypothesis. Screen is sharing, and now it's on that is slideshow mode. Okay, thank you so much. Now I start with this, the topic as have been assigned, formulation of hypothesis. Now here I want to share with all of you more through the PowerPoint presentation.
Formulating a hypothesis can take place at the very beginning of a research project or after a bit of research has already been done. Sometimes a researcher knows right from the start which variables he or she is interested in studying, and he or she may already have a hunch about their relationship. Other times, a researcher may have an interest in a particular topic, trend, or phenomena, but he may not know enough about it to identify variables or formulate a hypothesis. Whenever a hypothesis is formulated, the most important thing is to be precise about what one's variables are and what the nature of the relationship between them might be and how one can go about conducting of them. Now, when you have a question and how you need to turn it into a hypothesis is an educated prediction that provides an explanation for an observed event. An observed event in a measurable result or condition, if you cannot measure it, then you cannot form a hypothesis about it because you cannot confirm it or reject it. In addition, a hypothesis typically takes the form of an if, then a statement so that you can test it with your research. Now, as we all know that hypothesis has two words, and that is hypo plus thesis. And so hypothesis or hypo means tentative or subject to the verification, and thesis means the statement about solution of the problem. The word meaning of the term hypothesis is a tentative statement about the solution of a problem. Hypothesis offers a solution of a problem that is to be verified empirically and based on some rationale. Another meaning of the same word hypothesis, which is composed of two words. Hypo means composition of two or more variables, which is to be verified. Thesis means position of these variables in a specific frame of reference. This is the operational meaning of the term hypothesis. Hypothesis is a composition of some variables which have some specific position or rule of the variables that is to be verified empirically. It is a proposition about the factual and conceptual elements. So at times we call hypothesis is called a leap into the dark. It is a brilliant guess about the solution of a problem. A hypothesis is a tentative statement about the relationship between two or more variables. A hypothesis is a specific testable prediction about what you expect to happen in your study. To be complete, the hypothesis must include three components. Number one, that is the variables. Number two, the population. And number three, the relationship between the variables. Remember, a hypothesis does not have to be correct. While the hypothesis predicts what the researcher expects to see, the goal of research is to determine whether this guess is right or wrong. When conducting an experiment, researchers might explore a number of different factors to determine which one might contribute to the ultimate outcome. In many cases, researchers may find that the result of an experiment do not support the original hypothesis. When writing up these results, the researcher might suggest other options that should be explored in future studies.
A hypothesis is a prediction of what will be found at the outcome of a research project and is typically focused on the relationship between two variables studied in different research. It is usually based on both theoretical expectations about how things work and already existing scientific evidence. Within social science, a hypothesis can take two forms. It can predict that there is no relationship between two variables, in which case it is a null hypothesis. Or it can predict the existence of a relationship between variables, which is known as an alternative hypothesis. In either case, the variable that is thought to either affect or not affect the outcome is known as independent variable, and the variable that is thought to either be affected or not is the dependent variable. Researchers seek to determine whether or not their hypothesis or hypothesis, if they have more than one, will prove true. Sometimes they do and sometimes they do not. Either way, the research is considered successful if one can conclude whether or not a hypothesis is true. Now we come to the scientific hypothesis, which people refer to a trial solution to a problem as a hypothesis, often called an educated guess because it provides a suggested outcome based on the evidence. And however, some scientists reject the term educated guess as incorrect. Experimenters may test and reject several hypotheses before solving the problem. Now, working with hypotheses, when we work with a hypothesis, in a working hypothesis, it is a hypothesis that is provisionally accepted as a basis for future research, further research, in the hope that a tenable theory will be produced, even if the hypothesis ultimately fails. Like all hypotheses, a working hypothesis is constructed as a statement of expectations, which can be linked to the exploratory research purpose in empirical investigation. Working hypotheses are often used as a conceptual framework in qualitative research. In the recent years, philosophers of science have tried to integrate the various approaches to evaluating hypotheses and the scientific methods in general to form a more complete system that integrates the individual concerns of each approach. We now go to the origin of hypothesis, which is a. Excuse me, ma'am. Yeah. Ma'am, can you explain a little bit in Hindi also, so that the participants can also understand? Where can I get the? Can you? I mean, you take 10-15 minutes in English, then try to explain it within 2-3 minutes in Hindi. Then again 10-15 minutes in English, and then 2-3 minutes in. If it suits you, then this will be fine. Yeah, I thought that I will go with this thing only, this English talk. Yeah. Should be okay. Okay, you will you will entirely discuss in English, right? Yes, sir. Yes, so sir. then okay, fine. This is the duty of moderator now. Moderator will do this Hindi exercise. So so how I'll take 1 minute. You can do one thing. You take one part, okay, and then give it to the moderator to explain in Hindi. Then you can take the another part,
All And right, then- that okay. will be so nice, sir. So you and moderator, you decide that how you will go with this lecture, right? Now, since I have gone I've gone to the, I'm going to start with the origin or sources of hypothesis. So the earlier one, the moderator can go with the Hindi explanation now. Okay. Okay, So okay, you ma'am, you have. I'll try my best. Yes, Renu, please carry on. Yeah. Okay. Ma'am, please you start first. Wangshi Hello. ma'am. Yes. Wangshi ma'am, can you start your slideshow again? Right from the beginning. Yeah. No, no need of that. Okay. Now, if Start she wants to, if she wants to explain what I have already discussed, I can show you the slides, and then she can explain in Hindi. Will that be okay? Okay. Okay, ma'am. Yeah, this will be okay. Shall I start with the first slides? Is Okay, this all ma'am. right? Yeah, this is it. नमस्कार एक्चुअली आज हमारे जो स्पीकर हैं वो नॉर्थ ईस्ट से होने की वजह से थोड़ा सा हिंदी में बात उनके लिए उतना कंफर्टेबल नहीं है, तो हमने एक नया ये स्टार्ट किया है ताकि हमारे हिंदी बेल्ट के जो लोग हैं और लोग ही नहीं बल्कि उस सब्जेक्ट को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि वांगशी मैम की उन भावनाओं को आप तक पहुंचा सकूं जो उन्होंने यहाँ पे पीपीटी के थ्रू हमारे सामने रखा है। तो सबसे पहले उन्होंने अपनी पहली पीपीटी के अंदर ये बताया है कि किसी हाइपोथेसिस को बनाना किसे कहा जाएगा। यही कहा कि सबसे पहले हाइपोथेसिस को डिफाइन किया उन्होंने कि हाइपोथेसिस दो शब्दों से मिलकर के बना है, जिसमें हाइपो का मतलब होता है टेंटेटिव या जिसको हम कह सकते हैं कि शुरुआत वाली चीज जिसके अंदर शामिल की जाए, और थीसिस का मतलब है इस तरह का एक स्टेटमेंट जो किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के तौर पे या उसके हल के तौर पर लिया जाए। तो इस तरह से ये दोनों चीजें मिलकर के, यानी कि हाइपोथेसिस किसी भी चीज के लिए या किसी भी प्रॉब्लम के लिए फाइनल सॉल्यूशन नहीं होता है, बल्कि एक प्रारंभिक तौर पर सोचा गया सॉल्यूशन होता है। और उन्होंने ये भी बताया कि नेक्स्ट हाइपोथेसिस में उन्होंने बताया कि इसमें तीन चीजें जो हैं वो इंक्लूड की जाती हैं। पहला जो इसका तत्व था वो है वेरिएबल्स, या दूसरा इन्होंने लिया पॉपुलेशन, यानी वो पूरा का पूरा पार्ट जहां से जिसकी हम स्टडी करते हैं, और तीसरा चीज इन्होंने लिया है कि वो वेरिएबल्स और उस पूरे पार्ट के बीच का जो संबंध है जिसे पूरी रिसर्च के बाद में निकाला जाएगा। तो इन तीनों चीजों को शामिल करके हाइपोथेसिस बनाई जाती है। इन्होंने आगे ये भी बताया कि किसी भी एक्सपेरिमेंट को जब हम करते हैं तो फिर वहां पर हाइपोथेसिस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि हाइपोथेसिस जो होता है वो एक प्रेडिक्शन होता है, मतलब पहले से सोची गई एक बात होती है, और ये जरूरी नहीं है कि आउटकम जो उसका मिले, यानी आपकी रिसर्च का जो आउटकम हो वो वैसा का वैसा मिल जाए जैसा आपने उसको पहले सोचा गया है। सोशल साइंस में इन्होंने बताया कि हाइपोथेसिस को दो फॉर्म में लेते हैं। एक वो जिसके अंदर वेरिएबल्स के बीच में, यानी अगर हमने दो वेरिएबल लिए और उनके बीच के संबंध को निकाल रहे हैं तो उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई संबंध ना निकले, तो इस तरह की हाइपोथेसिस जब बनाई जाती है तो उसे हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं। और अगर उनके बीच में किसी तरह का संबंध निकल जाता है तो उसे ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कहते हैं। उसके बाद उन्होंने साइंटिफिक और हाइपोथेसिस के बारे में बताई। साइंटिफिक हाइपोथेसिस के बारे में इन्होंने बताया कि ये एक ट्रायल सॉल्यूशन होता है किसी भी प्रॉब्लम के लिए जिस पर आप रिसर्च कर रहे हैं, और इसे कुछ लोग एडुकेटेड गैस, यानी कि एक बहुत ही संभ्रांत तरीके से सोचा गया गैस है ये आपका, लेकिन सभी लोग इस बात को माने, ये भी उन्होंने यहाँ पे नकारा। वर्किंग हाइपोथेसिस के लोगों ने कहा कि मुख्य उद्देश्य तक पहुंचने के लिए, फाइनल उद्देश्य तक पहुंचने के लिए हम बीच के रास्ते के लिए छोटे छोटे हाइपोथेसिस बना लेते हैं जो आगे के हमारे काम के लिए आधार प्रदान करती हैं। मैम, नाउ इट्स ओवर टू यू। Okay. Now we go with the origin and sources of hypotheses. Hypotheses are originated from essentially the same background that serves to reveal problem. This background
knowledge, Excuse me, insight. Yes, ma'am, can you do the slideshow? yes, the slideshow is there. Ma'am, slideshow, the lower side button. Is this the one? Yeah. Okay. Now, these sources are namely theoretical background, knowledge, insight, and imagination that come from instructional program and wide-ranging experiences, familiarity with existing practice. The major sources of hypothesis are a specialization of an educational field, published studies, abstracts, research journals, handbooks, seminars on the issue, current trends on the research area, instructional programs persuaded, analysis of the area studied, considering existing practice and needs, extension of the investigation, offshoots of research studies in the field. Researchers employ these sources, these major sources, for formulating hypotheses of his or her investigation. He or she has two logical processes to thrown upon in developing hypotheses. The processes are known as deductive thinking and inductive thinking. Deduction is a process which goes from the general to the specific. In deduction, general expectations about problem or events based on presumed relationships between variables are used to arrive at more specific expectations. Induction thinking is a process which goes from the specific to the general. In the induction process, researcher starts with specific observation and combines them to produce a more general statement of relationship, namely a hypothesis. Induction begins with data and observations or empirical events and proceed towards hypothesis and theory, while in deduction begins with theory and general hypothesis and proceed towards few hypotheses. Now, few prominent sources of hypothesis are, we have intuition, hunch or intuition. A hypothesis may be based on simply a hunch or an intuition of a person. It is a source of virgin data or virgin idea. Such a hypothesis, if tested, may ultimately make an important contribution to the existing science or body of knowledge. However, when a hypothesis is tested in only one study, it suffers from two limitations. First, there is no assurance that the relationship established between the two variables incorporated in the hypothesis will be found in other studies. Secondly, the finding of such hypotheses are likely to be unrelated or unconnected with the other theories or body of science. Shall I give time for the interpretation, sir? Yeah, ma'am, please. Okay. Slide back. Yeah. Thank you. Oh. वांशी मैम जो हमारी स्पीकर हैं वो यहाँ पर हाइपोथेसिस को कैसे बनाई जाए उसके लिए कहाँ से आपको आइडियाज मिलेंगे इस पर इन्होंने यहाँ पे फोकस किया है. उन्होंने बताया है कि हाइपोथेसिस बनाने के लिए मुख्य स्रोत जो है वो सबसे पहला पॉइंट जो इन्होंने यहाँ डाला है वो है कि आपको उस फील्ड में जिसमें भी आप रिसर्च करना चाहते हैं उसमें उसका आपको गहन अध्ययन करना सबसे पहले बहुत ज्यादा जरूरी है. दूसरी चीज इन्होंने यहाँ पर डाली है कि जो पहले से लोगों ने काम कर चुके हैं उसमें जैसे पब्लिश्ड कोई मटेरियल है वहां पर या रिसर्च आर्टिकल्स कुछ निकले हुए हैं या जर्नल्स के अंदर कुछ आर्टिकल्स आए हुए हैं या उससे रिलेटेड कुछ हैंडबुक्स हैं उस रिलेटेड कोई सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं उसके अंदर जो पेपर पढ़े जाते हैं तो और दूसरा ये कि रिसर्च एरिया पर्टिकुलर उस रिसर्च एरिया के अंदर
वर्तमान में किस तरह का ट्रेंड चल रहा है। तो इन सारी चीजों का आभास आपको पहले से होना चाहिए, तभी आप एक बेहतरीन हाइपोथेसिस का निर्माण कर सकते हैं। इसी के साथ में ही आपके इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम जो भी हैं, जो उससे रिलेटेड जो स्कीम्स चला करती हैं, गवर्नमेंट की स्कीम है या दूसरे कोई प्रोग्राम है वो हो, या आप जिस क्षेत्र का अध्ययन करना चाहते हैं उस क्षेत्र का अध्ययन आपके लिए वहां का बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हाइपोथेसिस जो होती है उसमें कल्चरल एस्पेक्ट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसी तरह से वहाँ लोकल लेवल के ऊपर इंडिजिनस या स्थानिक आधार पर जिस तरह की प्रैक्टिसेस लोगों के बीच में सोशल प्रैक्टिसेस हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, और उनकी जो जरूरत है उसको ध्यान में रखते हुए हाइपोथेसिस का निर्माण किया जाना चाहिए। और इसी तरह से रिसर्च स्टडीज को फील्ड में जा करके और वहां से डेटा का कलेक्ट करना ज्यादा बेहतर रहता है, ताकि आपकी हाइपोथेसिस जो है वो अच्छे से फॉर्मुलेट हो सके। यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो हाइपोथेसिस जो बनती हैं वो एक तरह से ये उनको बनने की अलग अलग टाइप्स उन्होंने यहाँ पे बताया है। एक उन्होंने हंच या इंट्यूशंस बताया, नहीं पूर्वाभान हम लगा लें कि किस तरह की हाइपोथेसिस हम यहाँ पर बनाएं। तो हाइपोथेसिस में भी बेस्ड ये पूर्वाभान के आधार पर है, और ये इंडिविजुअल आदमी का यानी हर एक का अपना एक विशेष आइडिया होता है, एक विशेष सोच होती है जिसके आधार पे वो हाइपोथेसिस बना सकता है। दूसरा इन्होंने कहा कि दूसरों की फाइंडिंग्स के आधार पर हम हाइपोथेसिस बना सकते हैं। ऐसे काम हुआ हो या आपने कोई ऐसा काम देखा हो जिसके आधार पर अपना रिसर्च आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप वहां से हाइपोथेसिस को निकाल करके अपनी हाइपोथेसिस तैयार कर सकते हैं। एक इन्होंने ये भी कहा कि कोई थ्योरी या कोई सिद्धांत जो पहले से मौजूद है आप उसको आधार बनाते हुए अपनी हाइपोथेसिस यहाँ पर बना सकते हैं, जिसमें इन्होंने डिडक्शन और इंडक्शन दोनों ही तरीके की हाइपोथेसिस निर्माण की बात करी। इन्होंने बताया कि जब हम किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक डेटा को लेकर के और जनरल थ्योरी बिल्डिंग का यानी थ्योरी बनाने का काम करते हैं तो हम उसको इंडक्शन मेथड कहते हैं, और डिडक्शन मेथड में हम थ्योरी को अप्लाई करके और उसकी यूटिलिटी या उसकी जो फील्ड के अंदर उसकी जो रिटर्न है उसको हम देखते हैं। तो इंडक्शन और डिडक्शन दोनों ही तरह की हाइपोथेसिस या रिसर्च के द्वारा रिसर्च में हम हाइपोथेसिस का निर्माण कर सकते हैं। नाउ इट्स ओवर टू यू मैम। Okay, thank you. This we have I will cover up this finding of the others also, which I was keeping it as this it. Or did I complete this both finding and theory? Okay, now let me go to the general social culture. Here, in our origin of hypothesis, we have general social culture, which general social culture furnish many of its basic hypotheses, particularly value orientation in the culture. If it catches attention of social scientists for their careful observation, generates a number of empirically tested propositions in the form of hypotheses. We have analogy. Analogies may be one of the fertile source of hypotheses. Analogies stimulate new valuable hypotheses. They are often a fountainhead of the valuable hypotheses. Even casual observation in the nature or in the framework of another science may be fertile source of hypotheses. We have personal experiences, not only to culture. Science and analogy, among others, affect the formulation of hypotheses. The way in which an individual reacts to each of these is also the factor in the statement of hypothesis. Therefore, individual experiences in an individual contribution to the type and the form of the question researchers ask, as also to the kinds of tentative answers to the questions hypothesis that she might provide. Now, before going to the research of hypothesis, if you can complete this general, social, and analogy and personal experiences, my translator. ओके मैम, आई विल। यहाँ पर हमारी वक्ता ने 3 चीजों को शामिल किया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी हाइपोथेसिस जब हम बनाते हैं तो उस हाइपोथेसिस में 3 मुख्य बातों का हमें ध्यान रखना है। वो है सबसे पहली चीज
जिस भी क्षेत्र के लिए या जिस भी समाज के लिए हम बना रहे हैं, वहाँ की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए हमें उसे हाइपोथेसिस का निर्माण करना है। दूसरी चीज यहाँ एनालॉजी यानी फिलॉसफी, यानी उसके अंदर मुख्य भाव क्या है उसे ध्यान में रखना है, और उसको ध्यान में रख करके ही एक बेहतरीन हाइपोथेसिस को बनाया जा सकता है। तीसरी चीज ये यहाँ पर कह रही है कि जब भी हम फील्ड में जाकर के रिसर्च करना चाहते हैं या करते हैं, तो प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने से पहले हमें उस क्षेत्र की कल्चरल मतलब सांस्कृतिक के साथ ही वैज्ञानिक और जिसको हम कह सकते हैं सैद्धांतिक रूप से उस पूरे इलाके के बारे में जानकारी हो और उसका हमें पर्सनल एक्सपीरियंस हो, तभी हम उसके लिए एक बेहतरीन हाइपोथेसिस का निर्माण कर सकते हैं। नहीं तो सिद्धांतों में और वास्तविकता के अंदर टकराव प्रारंभ हो जाता है। ओवर टू यू मैम। Okay. Now let's see the research hypothesis. Now here, a hypothesis is a tentative answer. That is what we have come across to a research problem that is advanced so that it can be tested. So it's very clear. When do we use a hypothesis? When do we use a hypothesis? It is appropriate to use a hypothesis when you are testing a theory. Your immediate answer to this may be, I am not testing a theory. However, remember that our definition of theory is very broad, an idea about how things relate to each other. If you have an expectation of how your research questions will be answered, the outcome, then it is fair to say that you have a theory in mind. If you ask of your research question, what is the expected outcome, and have an answer, you can ask why. What is my thinking behind this prediction? This is essentially the theory that you will be testing. Now, if you are not able to predict the answer to your question, then your approach is not one of theory testing, and you shall not proceed with developing hypotheses to test. Your research question remain as such. This will be the case if your research is descriptive or explanatory in nature. So, Thank okay, you, yeah, you can interpret. या रिसर्च हाइपोथेसिस के डिफाइन करते हुए डेफिनेशन बताते हुए मैम यहाँ पर बता रही हैं कि हाइपोथेसिस जो होता है वो जिस रिसर्च प्रॉब्लम को लेके हमने रिसर्च प्रारंभ की है, उस रिसर्च को आखिर में हमें कैसे उसका रिजल्ट मिलने वाला है, उसका प्रारंभ में ही एक सोची गई टेंटेटिव, यानी कि एग्जैक्टली नहीं लेकिन पूर्व में ही एक अनुमान लगाया गया आंसर होता है। और रिसर्च हाइपोथेसिस अगर हमने बनाई है तो ये हम मान के चले कि हमें उसे टेस्ट करना होगा। यहाँ पर ये अपने नेक्स्ट उसके अंदर बताना चाह रही है कि हमें हाइपोथेसिस कब यूज में लेनी है। क्लियर कट आइडिया पर सभी पार्टिसिपेंट्स के सम्मुख रखा है। इन्होंने बताया है कि जब भी हम हाइपोथेसिस के टेस्टिंग के बारे में सोचते हैं, तो अगर इमीडिएट आंसर हमारे पास ये आता है कि नहीं, हम कोई थ्योरी को टेस्ट करने वाले नहीं हैं, लेकिन अगर हम किसी भी एक ऐसे टॉपिक को लेकर के हम या एक ऐसे रिसर्च क्वेश्चन को लेकर हम हाइपोथेसिस बनाने की सोच रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं, जिसका आंसर हमें देना है और वो टेंटेटिव आंसर हमारे दिमाग में है कि ऐसा हो सकता है कि ऐसा है, लेकिन ऐसा क्यों है, अगर वो क्यों का जवाब हम ढूंढना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करने जाएंगे। अगर हम वो क्यों आंसर नहीं ढूंढने वाले, हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन के ही अपने रिजल्ट्स को लेना चाह रहे हैं, तो वहां पर हमारे हाइपोथेसिस की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वहां टेस्टिंग की बात नहीं होती है। मैम, So that is, when do we use research hypothesis? Now here, research without hypothesis. In exploratory research, our base knowledge of a subject may be so low that we cannot formulate meaningful hypotheses. Nonetheless, exploratory research should be guided by a clear sense of purpose. Instead of hypothesis, the design for the exploratory study
should state its purpose or research objectives, as well as criteria by which the exploration will be judged successfully. Now, for example, if we are trying to encourage farmers to make use of compost, we may first need to know the social structure of the farming community before we begin making meaningful hypotheses about which individual will influence the decision and the factors that they consider when making their decision. We can state that our exploratory study would have the purpose of generating hypotheses about personal characteristics which correlate with the adoption, rejection of composting, the composition of the decision-making unit, and the factor which influence the decision either to adopt or reject. So success would be measured in terms of generating testing hypothesis. Interpretate hypothesis which seeks to develop knowledge through understanding meaning does not usually proceed with hypothesis. Before we go to types, if you can. Yeah. Okay, ma'am. uh, मैम यहाँ पे बता रही हैं कि वो कौन सी रिसर्च है जिसमें हाइपोथेसिस की जरूरत नहीं होती है। उन्होंने बताया कि जब भी हम एक्सप्लोरेटरी या किसी भी नई चीज को निकालने के लिए जाते हैं तो वहां पर हमें हाइपोथेसिस की जरूरत नहीं होती है। ये कौन सी एरिया हो सकते हैं, उन्होंने बताया कि जब ऐसा टॉपिक हमारा ऐसा है कि जहां पर हम लोगों के पर्टिकुलर बृहद स्तर पर जाकर के ऑब्जर्वेशन का काम कर रहे हैं, तो पहले से हमें वहां पर ये सोचने की जरूरत नहीं होती कि ये वेरिएबल्स एक दूसरे को किस तरह से कोरिलेट करेंगे। तो वहाँ हाइपोथेसिस नहीं बनाकर वहां पर हमारे सिर्फ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल लिया कि अगर किसान के पास जाकर के एक पर्टिकुलर एक एरिया में किसान के पास जाकर के हम उसके द्वारा कंपोस्ट खाद को काम में लेने या ना लेने का अगर हम स्टडी करना चाहें तो वहां पर हमें सबसे पहले उसके सोशल बैकग्राउंड का अध्ययन करना पड़ता है और फिर हम निकालते हैं कि किस तरह के किसान जो हैं वो सोशल कंपोस्ट काम में ले रहे हैं और क्यों ले रहे हैं, और किस तरह के नहीं ले रहे हैं तो क्यों नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पर पहले से कोई हाइपोथेसिस का निर्माण हम नहीं करते हैं जिसको हम बाद में जाके टेस्ट करेंगे, बल्कि हम रिसर्च क्वेश्चन ही बनाते हैं और उन्हीं रिसर्च क्वेश्चन का जवाब जो है वो हम हमारे रिसर्च में देखते हैं। मैम, ओवर टू यू। Okay, now let us come to the types of research hypotheses. The alternative hypothesis states that there is a relationship between the two variables being studied. One variable has an effect on the other. It states that the results are not due to chance and that they are significant in terms of supporting the theory being investigated. So that is an alternative hypothesis. And the null hypothesis states that there is no relationship between two variables being studied. One variable does not affect the other. It states results are due to chance and are not significant in terms of supporting the idea being investigated. Here, a two-tailed non-directional hypothesis predicts that the independent variable will have an effect on the dependent variable, but the direction of the effect is not specified. Example, there will be differences in how many numbers are in adults. One tailed directional hypothesis predicts the nature of the effect of the independent variables on the dependent variable. Example, adults will correctly recollect more words than children. So that falls under all the non-hypothesis. And complex hypothesis. In complex hypothesis, this predicts the relationship between two or more independent variables and two or more dependent variables.
I give time to the interpreter. यहाँ पर रिसर्च हाइपोथेसिस के प्रकार की बात कर रही हैं मैम, और मैम कह रही हैं कि अभी तक जब हम बात कर रहे थे तो ऑल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस, दो तरह की हाइपोथेसिस की बात कर रहे थे। यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस की भी बात कर रही हैं। मैम कह रही हैं कि जब भी हम हाइपोथेसिस बनाते हैं तो वहां पर दो ही बात होती है कि हमने जो वेरिएबल्स लिए वो वेरिएबल्स या तो एक दूसरे के साथ संबंध रखते हैं या संबंध नहीं रखते हैं। अगर वो संबंध नहीं, वो उन दोनों का कोई संबंध है, बल्कि जो रिजल्ट आ रहा है वो बाय चांस नहीं आ रहा है, बल्कि एक के बढ़ने से दूसरे में बढ़ना या कमी हो रही है, तो जब वो संबंध स्थापित हो गया हमारे डेटा के द्वारा, तो हम जो हाइपोथेसिस तैयार हो इसी नल हाइपोथेसिस होती है कि जब हम ये मान के चलते हैं कि इन दो वेरिएबल्स के बीच में किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है, तो उसे हम नल हाइपोथेसिस कहेंगे। एक कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस की मैम बात कर रही है कि जब भी हम दो वेरिएबल नहीं बल्कि दो या दो से ज्यादा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात करते हैं। मतलब एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से संबंध की हम बात नहीं कर रहे, बात हम कर रहे हैं कि दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स दोनों तरफ हैं, दो से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो जब हाइपोथेसिस का निर्माण जब हम करते हैं तो उसे हम कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस कहते हैं। ओवर टू यू मैम। Next, we have a directional hypothesis. This may imply that the researcher is intellectually committed to a particular outcome. Now here they specify the expected direction of the relationship between variables, and that is, the researchers predict not only the existence of a relationship, but also its nature. Scientific journals, articles generally use this form of hypothesis. We have non-directional hypothesis, and here this form of hypothesis is used in studies where there is no scientific past research on which to base in this case, do not stipulate the direction of the relationship. Continuing with the simple examples or the same example, a non-directional hypothesis would read, the academic performance of a high school student is related to their participation in extracurricular activities. Associative hypothesis. So in associative hypothesis proposes relationship between variables. When one variable changes, the other also changes. Here, we do not indicate the cause and effect. And in causal hypothesis propose a cause and effect, the cause and effect interaction between two or more variables. The independent variable is manipulated to cause effect on the dependent variable. The dependent variable is measured to examine the effect created by the independent variable. For example, as mentioned, the causal hypothesis will state high school students who participate in extracurricular activities spend less time studying, which leads to a low grade point average. When verifying such hypotheses, the researchers need to use statistical techniques to demonstrate the presence of a relationship between the cause and effect. Such hypotheses also need the researcher to rule out the possibility that the effect is the result of a cause than what the study has examined. Now you can interpret, yeah. रिसर्च हाइपोथेसिस के प्रकारों पर आगे की ओर प्रकाश डालते हुए मैम ने बताया कि ये चार और इन्होंने तरीके बताए हैं कि किस तरह के हाइपोथेसिस होती है। तो सबसे पहले डायरेक्शनल हाइपोथेसिस या दिशा निर्मित हाइपोथेसिस की बात ये कर रही हैं, जहां पर ये कह रहे हैं कि रिसर्चर को ये पता होता है कि पर्टिकुलर जो रिलेशन है, दो के बीच में जो संबंध है
वो किस तरह का निकल के उनके सामने आने वाला है, पहले से उन्हें पता होता है। जैसे मैम ने नहीं बताया पर मैं अपनी तरफ से एड ऑन कर रही हूँ, जैसे E = mc² की अगर हम बात करते हैं तो हमें ये पता है कि एनर्जी में और वेव्स में वहां पर क्या संबंध होने वाला है, जो पहले से साइंटिफिकली प्रूव है और हम उसको अप्लाई करने के दौर पे देख रहे हैं कि इस तरह का एक रिजल्ट बनेगा। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में हमें पहले से पता नहीं होता है कि किस तरह का रिलेशन जो है वो दो वेरिएबल्स के अंदर निकल के हमारे सामने आएगा। जैसे मैम ने एग्जांपल यहाँ पे दिया कि हाई स्कूल के स्टूडेंट्स में अगर वो उनकी पढ़ाई का रिजल्ट हम देखें और को करिकुलर एक्टिविटीज का रिजल्ट हम देखें तो हमें पहले से नहीं पता होगा कि किस तरह का रिजल्ट उनका हमारे सामने आते हैं। तो ज्यादातर सोशल स्टडीज में नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस जो है वो ज्यादा काम में ली जाती है और साइंस बैकग्राउंड वाले रिसर्च में डायरेक्शनल हाइपोथेसिस काम में ली जा रही है। नेक्स्ट उन्होंने बताया एसोसिएटिव हाइपोथेसिस। उन्होंने बताया कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन होगा और एक में परिवर्तन दूसरे में परिवर्तन को जन्म देगा, लेकिन उसके पीछे क्या कारण है, इस कारण की खोज उस रिसर्च में नहीं की जाती है। इसी तरह से जब दूसरे कॉजल हाइपोथेसिस की हम बात करते हैं तो वही चीज जो संबंध है, एक में परिवर्तन दूसरे में परिवर्तन को जन्म देता है, लेकिन क्यों देता है, हम उस क्यों का जवाब भी इस कॉजल हाइपोथेसिस में जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर उन्होंने उसी एग्जाम्पल हाई स्कूल जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स चूंकि कम टाइम जो है वो अपनी पढ़ाई पे दे पाते हैं, अगर को करिकुलर एक्टिविटीज करते हैं तो उनके मार्क्स जो है वो कम आ रहे हैं। तो इस तरह का एक रिलेशन जो है कॉजल यानी कि कारण बताते हुए अगर बताया जाता है तो उसे हम कॉजल हाइपोथेसिस कहते हैं। मैम We go to the nature of hypothesis. Now here, let's see, the nature of hypothesis is a clear statement of what it intended to be investigated. It should be specified before research is conducted and openly stated in reporting the results. This allows to identify the research objectives, the key abstract concept involved in the research, and the relationship to both the problem statement and the literature review. We have some features of hypothesis, and the main feature of hypothesis is it is conceptualized in nature. It is verbal statement in a declarative form. It has the empirical referent. It indicates the tentative relationship between two or more variables. It is a powerful tool of advancement of knowledge, consistent with existing knowledge and conducive to further inquiry. Now it can be tested, verifiable, or falsifiable. It is not moral or ethical questions. It is neither too specific nor too general. It is a protection of consequences. It considered valuable even if proven false. So before we go to the rules, if you can explain. मैम previous slide please. Thank you मैम। यहाँ पर हाइपोथेसिस की प्रकृति को बताते हुए मैम कह रही हैं कि हाइपोथेसिस एक बिल्कुल स्पष्ट सेंटेंस होता है, एक स्टेटमेंट होता है जो ये बताता है कि इन्वेस्टिगेशन में क्या किया जाना है, मतलब रिसर्च में फाइनली हम क्या करना चाह रहे हैं। ये भी बता रही है कि इट शुड बी स्पेसिफाइड, रिसर्च से पहले हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए कि रिजल्ट में हम उसको हाइपोथेसिस को लेकर के हम अपने रिजल्ट को वेरीफाई करेंगे या जस्टिफाई उसको वहां पर देंगे। तो हाइपोथेसिस का जो प्रकृति है वो प्रारंभ से लेकर के अंतिम अवस्था तक रहती है। इन्होंने बताया कि हाइपोथेसिस में हम किन किन चीजों को डालेंगे। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव यानी रिसर्च के हमारे उद्देश्य क्या है हम उन्हें डालते हैं। इसी के साथ ही हम रिसर्च क्यों करना चाहते हैं उसका जो मुख्य हमारी बात रहेगी, जो एब्स्ट्रैक्ट रहेगा, उस बेसिक कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर डालने चाहिए हाइपोथेसिस के अंदर। और इसी तरह से जो लिटरेचर रिव्यू से हमारे सामने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट वगैरह बन के तैयार होते हैं
उन सारी चीजों को समावेशित करते हुए या उनमें किस तरह की रिलेशनशिप है, इस बात को हम यहाँ हाइपोथेसिस के अंदर डालें। तो ये तीनों चीजों को हम डालते हुए हाइपोथेसिस का निर्माण होना चाहिए। इन्होंने बताया कि हाइपोथेसिस के कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इसकी चारित्रिक विशेषता वो इस तरह से है कि इसकी जो प्रकृति है वो टू बी डिफाइंड होती है, मतलब इसको विस्तार से डिफाइन किया जा सकता है, बताया जा सकता है। ये एक वर्बल स्टेटमेंट, एक जिसको कहेंगे स्टेटमेंट होता है, लेकिन इसको हम डिक्लेयर फॉर्म में बताते हैं, इसको स्पष्ट तौर पे हम बताते हैं कि आगे हमारे सामने हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह से इन्होंने बताया कि ये टेंटेटिव रिलेशनशिप को बताता है, दो या दो से अधिक वेरिएबल को, क्योंकि उसी आधार पर हम हाइपोथेसिस का निर्माण कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि आगे की और ज्ञान की प्राप्ति या ज्ञान को अभिवृद्ध करने के लिए हम जिस तरह के उपकरणों का प्रयोग करते हैं, तो उसमें हाइपोथेसिस एक बहुत ही पावरफुल टूल होता है। इन्होंने ये भी बताया कि हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है, चाहे ये गलत जाए, यानी चाहे ये नल हाइपोथेसिस बने या ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बने, मतलब ये एक्सेप्ट हो या रिजेक्ट हो, बल्कि टेस्ट किया जाना इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। ये लेकिन कोई भी मॉरल क्वेश्चन या इथिकल क्वेश्चन को हम हाइपोथेसिस में नहीं लेंगे, क्योंकि ऐसी अवस्था के अंदर वो बहुत डिस्प्यूटेबल हो जाता है और हमारी रिसर्च को कोई एक मार्क नहीं प्रदान कर सकता, कोई एक लेवल तक नहीं पहुंचा सकता है। ये बहुत स्पेसिफिक, यानी कि किसी एक चीज पर अप्लाई होने वाली भी नहीं होनी चाहिए और इतनी जर्नल भी ना हो कि सभी पर अप्लाई हो जाए, क्योंकि हम जो रिसर्च वर्क कर रहे हैं ये हमारे रिसर्च वर्क को बताने वाली होनी चाहिए। इसी तरह से उन्होंने बताया कि ये जो भी हमारे सामने रिजल्ट आने वाला है उसको पूर्व में ही बताए जा सकने वाली होनी चाहिए, और साथ ही ये बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, चाहे बाद में इसे हम नकार दें या इसे हम इसके विपरीत हमारे रिजल्ट जाए। मैम, Now let's look at the rule of hypothesis. In the rule of hypothesis, which is a professional formulation, plays a significant role in the empirical or sociological research. It not only navigates research in a proper direction, but also contributes in testing or suggesting theories and describing a social or legal phenomenon. Under the role of hypothesis, we have the role of hypothesis in navigating research. A hypothesis, regardless of its source, states what a researcher is looking for. Here, it also suggests some possible explanation about the probable relationship between the concepts or variable indicated therein. In fact, it navigates the research. Without it, no further step is possible in empirical research or non-doctrinal legal research. A hypothesis helps the researcher in drawing meaningful conclusions supported by relevant empirical data. A hypothesis serves as a sound guide to, number one, that is, the kind of data that must be collected in order to answer the research problem. Number two, the way in which the data should be organized more efficiently and meaningfully. And number three, the type of methods that can be used for making analysis of the data. So these are the rules of hypothesis. This is number one, which shows the hypothesis in navigating research. And we have the rule of tested hypothesis. In the rule of tested hypothesis, a hypothesis need to be experimentally tested to draw some inferences about the initially positioned relationship between the variables indicated in the hypothesis. Therefore, when it is empirically tested or not, the initially assumed relationship between the concepts or variables, as the case may be, becomes a proof fact. Once a hypothesis is established, it ceases to be a hypothesis. Now,
we have a hypothesis also that performs scientific significant functions, and there we have a test theory. And in this test theory, a hypothesis, when empirically proved, helps us in testing an existing theory. Now it's very important. A theory is not a mere speculation, but it is built upon facts. It is a set of interrelated propositions or statements organized into a deductive system that offers an explanation to some phenomenon. Now, with suggest new theories. Now, if we go to this, the significant functions that suggest new theories, a hypothesis, even though related to some existing theory, may, after tested, reveal certain facts that are not related to the existing theory or disclose relationship other than those stated in the theory. And it does not support the existing theory, but suggests a new theory. Now we have the next studies describe social phenomena. Each time a hypothesis is tested empirically, it tells us something about the phenomena it is associated with. And if the hypothesis is empirically supported, then our information about the phenomenon increases, even if so that is in descriptive social phenomenon. And we have suggest social policy. Now here a hypothesis after its testing may highlight such ills of the existing social or legislative policy. In such a situation, the tested hypothesis helps us in formulating or reformulating of social policy. It may also suggest or hint at probable solution to the existing social problems and their implementations. Now I give time for the interpretation. Hello, ma'am. Yeah, ma'am. This one, Yeah. role of hypothesis. Yeah. मैम यहाँ पर तीन बातों को लेकर के अपना लेक्चर पे इस पे फोकस किया मैम ने स्लाइड पर. इन्होंने बताया कि हाइपोथेसिस जो भी बनाई जाती है उसका मुख्य उद्देश्य या मुख्य एम क्या रहता है. उन्होंने बताया कि हाइपोथेसिस किसी भी स्रोत से बनाई गई हो, किसी भी चीज को देख करके, चाहे पहले किसी रिसर्च हुआ है वहां से हाइपोथेसिस ली गई है, या किसी कॉन्फ्रेंस के किसी टॉपिक से सोच के ली गई, या कोई पब्लिकेशन से ली गई है, चाहे कहीं से भी हाइपोथेसिस बनाई गई हो. हाइपोथेसिस जो होती है वो तीन चीजों के लिए बहुत अहम होती है, और हाइपोथेसिस आगे के लिए रास्ता खोलती है. किस किस के लिए? सबसे पहली चीज कि जो भी व्यक्ति रिसर्च कर रहा है वो रिसर्च में किस तरह के डेटा को कलेक्ट करेगा, इस चीज का फैसला जो है ये डिपेंड करता है कि आपकी हाइपोथेसिस क्या है. दूसरी चीज, किस तरीके से उस कलेक्ट किए हुए डेटा को कंप्राइज किया जाए, एक साथ रखा जाए, ऑर्गेनाइज किया जाए, टेबुलेशन किया जाए कि वो रिजल्ट मिल सके जो हाइपोथेसिस के जरिए हम चाह रहे हैं. और तीसरी चीज है कि वो कौन से मेथड्स या टूल्स एंड टेक्निक्स अप्लाई किए जाएं जिसके द्वारा हमें हाइपोथेसिस जिस तरह के दिशा में रिसर्च को ले जाना चाहता है वो प्राप्त की जा सके. यहाँ पर इन्होंने बताया कि हाइपोथेसिस पहले बता चुके कि हाइपोथेसिस की टेस्टिंग होती है. तो एक टेस्टेड हाइपोथेसिस जो होता है उसका क्या रोल रहता है उसे बताया इन्होंने बताया कि हाइपोथेसिस के लिए आवश्यक है कि वो टेस्ट की जाए, और टेस्ट करने के साथ साथ उससे जो रिजल्ट निकल करके आए वो बताए जा सकते हैं कि पहले जो वेरिएबल्स लिए गए थे उनमें आपस में क्या रिलेशन थे, और बाद में अगर वो चेंज हुए तो वो क्या हुए. तो इस तरह से एक जो टेस्टिंग का काम जो है, जो पहले सोची गई रिजल्ट था और वास्तव में जो हमें रिजल्ट मिला, उन दोनों को बताने का काम ये टेस्टेड हाइपोथेसिस ही करता है. इन्होंने यहाँ पे ये भी बताया कि हाइपोथेसिस कुछ विशेष प्रकार के कार्य करता है. क्या करता है? सबसे पहले
जो ऑलरेडी कोई थ्योरी बनी हुई है, जैसे साइंस की कोई थ्योरीज बनी हुई है, या हमारे यहाँ माइग्रेशन की कोई थ्योरी, ज्योग्राफी में माइग्रेशन की कोई थ्योरी बनी हुई है, तो उस थ्योरी को वो टेस्ट करने की कोशिश करता है कि क्या थ्योरी उस पर्टिकुलर एरिया में अप्लाई हो रही है। जैसे वेबर का सिद्धांत है, तो वेबर का सिद्धांत क्या किसी आपके जो रिसर्च एरिया का सेक्शन है वहां पर अप्लाई हो रहा है। तो पहली चीज हो गई हाइपोथेसिस, ऑलरेडी जो पहले से बनी हुई थ्योरीज है उनको टेस्ट करने का काम करता है। दूसरी चीज, अगर वो ऐसा कर रहा है तो उसी दौरान हो सकता है कि कुछ ऐसे फैक्ट्स हों जो उस थ्योरी के अंदर शामिल नहीं है, लेकिन आपने अपनी रिसर्च के दौरान उसे निकाले हैं, तो उन फैक्ट्स को शामिल करते हुए आप हाइपोथेसिस के जरिए नई थ्योरी का निर्माण भी सजेस्ट कर सकते हैं या वहां पर बना सकते हैं। तो ये चीज भी हाइपोथेसिस का एक फंक्शन में आता है। उसके बाद में दो चीजें और यहाँ पर इन्होंने ली हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज मैम। या इन्होंने कहा कि सामाजिक तौर पर जितने भी तत्व फैले हुए हैं उन सारों के अंदर से उसको वृहद स्तर पर ले जाकर के वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक बड़ा एरिया लिया जाता है, उससे फिर वो सूक्ष्म की ओर वहां तक पहुंचते हैं, और यही रिसर्च के दौरान एक हाइपोथेसिस जो है वो निकाल के देता है। ये भी इन्होंने कहा कि कुछ ऐसी चीजें हमारे समाज में फैली भी हो सकती हैं जो जिनको हम कह सकते हैं कि मेल फंक्शंस हो, जो हमारी इल एक्टिविटीज हो, तो उन सारी चीजों को पॉलिसी के लिए और सामाजिक तौर पर, दोनों ही तौर पे वो किस तरह से गलत है समाज के लिए, उन चीजों को निकालने का काम भी एक हाइपोथेसिस के द्वारा किया जा सकता है। Okay, now let's. It's over, ma'am. Now, Yes. yeah. Yeah. Importance of hypothesis. Now, before we come to this, I would like to give you some of the functions of the importance of hypothesis. It helps in the important rules that helps in making hypothesis is that it helps in the testing of the theories, serve as a great platform in the investigation activities, provides guidance to the research work or study. Next is hypothesis sometimes suggests theories. It helps in knowing the needs of the data. Hypothesis explains social phenomena. Hypothesis develops the theory. It also acts as a bridge between the theory and the investigation. And it provides a relationship between phenomena in such a way that it leads to the empirical testing of the relationship. These are the functions that I'm just clapping for the next point. And hypothesis also helps in knowing the most suitable techniques of analysis for our research. And it helps in the determination of the most suitable types of research, provides knowledge about the required sources of data, and hypothesis research becomes focused under the direction of the hypothesis. Very helpful in carrying out an inquiry of a certain activities, which helps in reaching conclusions if it is correctly drawn. And there are 5 main functions of hypothesis as the research progress, and that is, it is a temporary solution of a problem concerning with some truth, which enables an investigator to start his or her work. Now, the second point is it offers a basis in establishing the specific what to study for and may provide possible solution to the problem. Each hypothesis may lead to the formulation of another hypothesis. A preliminary hypothesis may take the shape of final hypothesis. Each hypothesis provides the investigator to define statement which may be objectively tested and accepted or rejected, and leads for interpreting results and drawing conclusions that is related to original purpose. So that these are the functions and the rule of hypothesis, which leads to the importance of our hypothesis. A hypothesis is often
known as the investigator's eyes. It focus it focuses research. Now here it focuses research. Without hypothesis, research is unfocused research and remains with a random empirical wandering. Now it serves as hypothesis serves as necessary link between theory and the investigation. It places clear and specific goals. A well-thought set of hypotheses is that they place clear and specific goals before the research worker and provide researcher with a basis for selecting sample and research procedures to meet these goals. The third one is it links together. It serves the important function of linking together related facts and informations and organizing them into wholes. We have it prevents blind research. The use of hypotheses prevents a blind search, an indiscriminate gathering of masses of data which may later prove irrelevant to the problem under study. As a source of guiding light, hypothesis serves as a powerful beacon that light the way for the research work. So these are the importance of hypothesis, if you may kindly interpret here. Yeah, sure, ma'am. हाइपोथेसिस की उपयोगिता क्या है पूरे रिसर्च में? तो हाइपोथेसिस जो होता है वो वास्तव में किसी भी रिसर्चर के लिए एक आंख की तरह काम करता है कि रिसर्च को शुरू कैसे करना है। ये हम पहले बात कर लिया कि डेटा को कलेक्ट करने में, फिर को एक जगह इकट्ठा करने में, फिर उसके बाद में उससे जो रिजल्ट हमें प्राप्त हो रहा है उसको प्रूव करने में हाइपोथेसिस की उपयोगिता होती है। तो लेकिन जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि रिसर्च वर्क जो हमारा फैल जाता है, वो हम उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं ला पाते हैं, और तब तक नहीं ला पाएंगे जब तक कि हम उसमें फोकस्ड नहीं रहेंगे। तो हाइपोथेसिस जो है वो हमें सबसे पहला जो काम करती है वो करती है हमें हमारे रिसर्च पर फोकस रखने का काम करता है। हाइपोथेसिस ही हमें बताता है कि हमारा जो वर्क है वो यहीं तक हमें करना है और इतने ही डेटा कलेक्शन के बाद हमें रिजल्ट्स देने हैं। तो सबसे पहला काम ये हमें हमारी रिसर्च काम पर फोकस रखता है। दूसरी चीज, हमारा गोल या हमारा उद्देश्य क्या है, उस पूरे उद्देश्य को स्पष्ट तौर पर हमारे सामने रखता है। उदाहरण के लिए अगर हम किसी भी क्षेत्र के इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें किन किन एलिमेंट्स को काम में लेना है, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी पे जाना है। तो हाइपोथेसिस ही हमें बताएगा कि हमारा स्पेसिफिक गोल क्या है और हम चीजों में इधर उधर फैलाते हुए काम ना करें बल्कि स्पेसिफिक रहें। तीसरी चीज है कि ये एक इम्पॉर्टेंट कड़ी की तरह काम करता है जिसमें हर एक चीज, मतलब मेथड्स क्या होंगे, डेटा क्या है, मेथोडोलॉजी क्या रहेगी, इसके अलावा रिव्यू ऑफ लिटरेचर में हमें क्या पढ़ना है। तो ये जो इंडिविजुअल चीजें हैं, इन इंडिविजुअल चीजों के बीच में कड़ी का काम करता है ताकि बेहतर तरीके से हम अपने फोकस्ड रह करके हाइपोथेसिस के रिसर्च का काम कर सकें। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। थैंक यू मैम। ये बिल्कुल वैसा है कि जैसे रुई की ढेर में से अगर हमें एक सुई निकालनी हो तो रिसर्चर को जब फील्ड में जाता है तो वो इसी तरह से उसके सामने होता है। पर अगर उसे पता है कि सुई का साइज क्या है और अप्रोक्सीमेट किस एरिया में वो मिलने वाली है, तो वो जो उसकी अननेसेसरी एक्सरसाइज है कि वो इधर उधर एरिया के अंदर घूम करके डेटा कलेक्ट करे, वो बच जाता है। तो हाइपोथेसिस हमें बताती है कि वो पर्टिकुलर एरिया क्या रहेगा, वो पर्टिकुलर मेथड क्या के डेटा कलेक्ट करने हैं। तो ये हमें जो ब्लाइंड रिसर्च है उससे हमें बचाता है। और सबसे अंत में मैम ने ये बताया है कि पूरी अपने रिसर्च के अंदर एक अंधेरे में जिस तरह से हमें रोशनी का जो किरण जो है वो हमें हमारी हाइपोथेसिस से ही मिल पाती है। ओवर टू यू मैम। Now let's go to the uses of hypothesis. In ancient times,
hypothesis refer to a summary of the plot of classical drama. Now here, the English word hypothesis comes from the ancient Greek word, well, it's written there, which we cannot pronounce. Hypothesis means whose literal or etymological sense is putting or placing under, putting or placing under, and hence in extended use has many other meanings, including supposition. In Plato's Meno, Socrates dissects Virgil with a method used by mathematicians, that of investigating for hypotheses. In this sense, hypotheses refer to a clever idea or to a convenient mathematical approach that simplifies cumbersome calculation. Cardinal Bellarmine gave a famous example of this usage in the warning issued to Galileo in the early 17th century, that he must not treat the motion of the earth as a reality, but merely as a hypothesis. So in common usage in the 20th century, a hypothesis refer to a provisional idea whose merit requires evaluation. And for proper evaluation, the framer of a hypothesis needs to define specific in operational terms. A hypothesis requires more work by the researcher in order to either confirm or disprove it. In due course, a confirmed hypothesis may become part of a theory or occasionally may grow to become a theory itself. Normally, scientific hypotheses have the form of a mathematical model. Sometimes, but not always, one can also formulate them as existential statements, stating that some particular instances of the phenomena under examination has some characteristics, and casual explanation which have the general form of universal statements, stating that every instant of the phenomenon has a particular characteristics. Hello, okay, you can carry on. You can finish up with this first use of hypothesis. Okay, thank you, ma'am. Use of hypothesis की बात मैम एक कालानुक्रम में मैम यहाँ पर बता रही हैं. वो कह रही हैं कि प्राचीन समय में हाइपोथेसिस जो वर्ड जो काम में लिया जा रहा था, वो लिया जा रहा था किसी भी ड्रामा या किसी भी नाटक के प्लॉट की समरी को बताने के लिए. इस तरह से इस हाइपोथेसिस का यूज किया जा रहा था. फिर जब प्लेटो और सुकरात का समय आया तो उन्होंने वहां पर मैथमेटिशियन के रूप में इसको काम में लिया और उन्होंने कहा कि कुछ भी इन्वेस्टिगेट करने का जो तरीका है उसको हाइपोथेसिस के रूप में लिया. लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें 21st सेंचुरी की अगर हम बात करें शताब्दी की, तो यहाँ पर हाइपोथेसिस जो वर्ड है उसे इस तरह से लिया जाता है कि जहाँ कहीं पर भी किसी भी जो एग्जिस्टिंग कोई चीज है उसमें से कोई चीज इवॉल्व होने की या अपवृद्धि करने की अगर कोई बात आती है तो वहां पर हम एक प्रोविजनल आइडिया यानी एक जिसको कह सकते हैं कि पूर्वानुमान लगाते हुए जिस तरह के आइडिया को काम में लेते हैं वहां पर हाइपोथेसिस को काम में लिया जा रहा है. तो ये विभिन्न कालों के अंदर हाइपोथेसिस में जो बदलाव आए उनको यहाँ पर मैम ने बताया है. मैम प्लीज. Thank you. Uses of hypothesis in educational research. Now here, the educational research may be classified into four types. The first is experimental research, next is normative research, next is historical research, and the fourth one is complex casual research. Hypotheses are indispensable for experimental research. The experiments are conducted to collect empirical data. The experiments are conducted to collect empirical data
to verify the hypothesis. The experimental method or experimental designs are based on hypotheses. Hypotheses are crucial aspects of such researches. In normative survey, research the investigators may or may not employ hypothetical type thinking depending upon the purpose of research study. Hypotheses are essential for analytical studies, and there is little scope in descriptive type of study. And in historical research, the purpose may be either to produce a faithful record of the past events, irrespective of the present day problem, or to extend the experiences with phenomena in the present to past in order to make the view of the phenomena. In complex casual research, the hypotheses have important role in such investigations. These type of studies are conceptual in nature, whereas historicals are more factual in nature. Therefore, formulation of hypotheses is a crucial step of this type of study. Now, if you can explain the four educational research, the four types of educational research. हाइपोथेसिस के उपयोगिता बताते हुए मैम यहाँ पर बता रही हैं कि चार तरह की हाइपोथेसिस या रिसर्च जो है एजुकेशनल स्पेशली अकादमिक रूप में अगर हम शोध की बात करें तो उसको यहाँ पे इन्होंने चार भागों में विभाजित किया है। पहला है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसके अंदर ज्यादातर साइंटिफिक रिसर्च जो है वो आती है, जिसमें अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के जरिए थ्योरी बिल्डिंग का काम किया जाता है। दूसरा है नॉर्मेटिव सर्वे रिसर्च, जिसके अंदर चीजों को इवेल्युएट किया गया और जरूरी नहीं कि ये साइंटिफिक हो, लेकिन एक कॉन्सेप्ट बनाने का काम या थ्योरी बनाने का काम इसके दौरान हुआ था नॉर्मेटिव सर्वे रिसर्च में। उसके बाद हिस्टोरिकल रिसर्च आया था और हिस्टोरिकल रिसर्च में हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स को प्रेजेंट जो भी वातावरण है उसके अंदर लाने का काम हुआ था। इसमें कहीं पर भी कोई एक्सपेरिमेंट की बात नहीं थी, बल्कि ये एक तरह से एक्सप्लोरेटरी ऑब्जर्वेटरी टाइप का ज्यादा रिसर्च था। इन सभी के अंदर ही चाहे हम साइंस वाली रिसर्च की बात करें तो उसके अंदर हाइपोथेसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन दूसरे नंबर पे जब हम बात कर रहे हैं कि कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग में, तो वहां पर हम रिसर्च क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हाइपोथेसिस भी बनाई जा सकती है। बट हिस्टोरिकल के अंदर हाइपोथेसिस निर्माण इतना आवश्यक नहीं है, वहां रिसर्च क्वेश्चन से काम चल सकता है। लास्ट जो है, जब हम कॉम्प्लेक्स कॉजल रिसर्च करते हैं, इसके अंदर हाइपोथेसिस बहुत क्रूशियल हो जाती है, बहुत जरूरी हो जाती है और उसको टेस्ट किया जाना भी जरूरी हो जाता है। तो नाउ इट्स ओवर टू यू मैम। Now let's come to how to write the hypothesis. Now here to write the alternative and null hypothesis for an investigation, you need to identify the key variables in the study. The independent variables is manipulated by the researcher, and the dependent variable is the outcome which is measured. Now that is the first step. And the second is to operationalize the variables being investigated. Here, operational variables or operationalizing definitions refer to how you will define and measure a specific variables as it is used in your study. Number 3, decide on a direction for your prediction. If there is evidence in the literature to support a specific effect on the dependent variable, write a directional one-tailed hypothesis. If there are limited or ambiguous findings in the literature regarding the effect of the independent variables on the dependent variables, write a non-directional two-tailed hypothesis. Now that comes under the decide on the direction of your prediction.
And the fourth one is write your hypothesis. A good hypothesis is short, that is concise, and comprises of clear and simple language. So that is how you have to write a hypothesis. If you can explain to, yeah. इस पीपीटी में मैम वो टिप्स दे रही हैं एक्चुअली हम लोगों को कि किस तरह से हाइपोथेसिस को लिखा जाए। तो उसमें सबसे पहली चीज ये बता रही है कि कोई भी रिसर्च करने से पहले जब हम हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करने की बात करते हैं, हाइपोथेसिस बनाने की बात करते हैं, तो चाहे हम ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाएं चाहे हम नल हाइपोथेसिस बनाएं, दोनों ही स्थितियों में हमें हमारे पास में वो वेरिएबल्स या उन तत्वों की जानकारी होनी चाहिए जो हमारे आगे जाकर के रिसर्च के काम में आने हैं। दूसरी चीज ये कह रही है कि जब वेरिएबल्स हमने डिफाइन कर लिए कि सपोज एक्स और वाई ये दो वेरिएबल हैं जिनका हमें आपस में रिलेशन जो है वो अपने रिसर्च में जानना है, तो वो एक्स और वाई वेरिएबल्स को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे वहां पे, यानी एक्स और वाई वेरिएबल्स मार्केट में या किसी के घर पे या एरिया के अंदर अवेलेबल नहीं होते हैं, हमें अपने क्वेश्चंस के जरिए वो एक्स और वाई वेरिएबल्स जो है वो निकालने होते हैं। तो हम एरिया निकालते हैं और उन एक्स और वाई को डिफाइन करते हैं। तीसरी चीज में ये कह रहे हैं, मैम बता रही हैं कि जब हमें हमारे पास वेरिएबल्स आ जाते हैं तो उन वेरिएबल्स को लेकर के उस हाइपोथेसिस के जरिए हम उनको किस डायरेक्शन में उनको फॉर्मुलेट करना चाहते हैं, किस डायरेक्शन में हम उनसे रिजल्ट चाहते हैं, तो वो रिजल्ट या वो जो दिशा है वो हमारे सामने पहले से तय हो जानी चाहिए। चौथी चीज में ये कह रहे हैं कि हाइपोथेसिस इस तरह से होनी चाहिए कि वो छोटी हो, ऐसा ना हो कि हम एक पैराग्राफ की हाइपोथेसिस बना रहे हैं। दूसरी चीज, उसके अंदर हमारा मूल उद्देश्य जो भी हम रिसर्च वर्क से चाहते हैं वो क्लियर होना चाहिए और उसकी भाषा इतनी स्पष्ट होनी चाहिए कि पढ़ने पर एक बार में ही समझ आ जाए। मुझे नहीं पता कि मैं मैम की सारी बातों को किस तरह से आप तक पहुंचा पा रही हूँ, लेकिन इतना तय है कि मैं मेरी तरफ से पूरा एफर्ट डाल रही हूँ। मैम, इट्स ओवर टू यू। Yeah, that's good. That's fine. Now, how to write the hypothesis known about just now, and we can go to, can a hypothesis be proven? So let us ask the question, can a hypothesis be proven? Here, upon analysis of the result, an alternative hypothesis can be rejected or supported, but it can never be proven to be correct. I hope this is very clear. We must avoid any references to results proving a theory, as this implies 100% certainty, and there is always a chance that evidences may which could refute a theory. So that is about the hypothesis be proven. And next we have how to develop a hypothesis. Another important aspect of hypothesis is that it should be based on research. How to develop research. Now, before this, we have already covered how to write a hypothesis. Can a hypothesis be proven? And this whole hypothesis. So remember that the purpose of a hypothesis is to find the answer to a question, right? The you should do is find as much information as the topic as you can before you come up with a specific hypothesis. Spend some thinking or spend some time doing research, then start thinking of the questions you still have. After thoroughly researching your question, you should have an educated guess about how things work. This guess about the answer to your question is where your hypothesis comes from. So if you can interpret this, madam. Yeah, sure, मैम। सबसे पहले मैम ये कह रही है कि हाइपोथेसिस को प्रूव कैसे किया जाए। तो मैम यह बता रही हैं कि हम जो भी हाइपोथेसिस पहले से मान के चल रहे हैं वो हो सकता है कि रिसर्च यानी पूरे खत्म हो जाए
और ये भी हो सकता है कि उसे सपोर्ट किया जाए कि नहीं ये बात सही थी, लेकिन वो कभी भी पूरी तरह से सही नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर हमने रिसर्च से पहले ही हमारा जवाब जान लिया है और पूरी तरह से हम ये मान के चल रहे कि यही हमारा जो रिजल्ट आने वाला है, तो हमने फिर रिसर्च क्या की है। तो रिसर्च में ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाइपोथेसिस पूरी तरह से एग्जैक्टली सही की सही निकल जाए, बल्कि सपोर्टिंग उसके साथ में जो रिजल्ट है वो और भी हमारे पास में आने चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में मैम ये बता रही हैं कि हाइपोथेसिस कैसे डेवलप की जाए। सो एक्चुअली इट्स अ काइंड ऑफ रिसर्च से पहले की एक माइनर रिसर्च है, और हाइपोथेसिस डेवलप करना, जैसे मैम ने कहा था कि सबसे पहले हम रिसर्च से पहले हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं, लेकिन हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने के लिए भी से रिसर्च करनी पड़ती है। सबसे पहले क्वेश्चन लिया जाता है, क्वेश्चन को लेके हाइपोथेसिस क्रिएट की जाए, हाइपोथेसिस को क्रिएट करने के बाद रिसर्च किया जाए, फिर रिसर्च के दौरान ये देखा जाए कि क्या हमारी हाइपोथेसिस जो है वो हमारे रिसर्च को सपोर्ट कर रही है। अगर हाँ तो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ जाए, नहीं तो फिर से एक बार पुनः हाइपोथेसिस को रिफाइन किया जाए और हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हमारी जो रिसर्च पैटर्न जो चल रहा है, जो तरीका चल रहा है, उसको रिफाइन किया जाए। तो ये एक तरह से एक प्रोसेस जो है वो उसी तरह से है कि रिसर्च, हाइपोथेसिस के बाद रिसर्च, रिसर्च के बाद वापस हाइपोथेसिस, देन अगेन रिसर्च, और इसी तरह से हम हमारे रिजल्ट तक पहुंच पाते हैं। नेक्स्ट प्लीज मैम। Now, before this, how to develop a good research, I would like to, now let us straight away go to this before I give some examples. How to develop a good research hypothesis. A hypothesis is a statement that introduces a research question and purposes and expect results. It is an integral part of the scientific methods, the performance of scientific experiments. Therefore, you need to be careful and thorough when building your hypothesis. Followed by the importance of testable hypothesis. To devise and perform an experiment using the scientific method, you need to make sure that your hypothesis is testable. You have to make sure that your hypothesis is testable. To be considered as testable, some essential criteria must be met. So these are, the first is there must be a possibility to prove that the hypothesis is true. There must be a possibility to prove that the hypothesis is false. And also the result of the hypothesis must be reproducible. Within this criteria, the hypothesis and the result will be vague. As a result, the experiment will not prove or disprove anything. So this is one of the important testable hypothesis, which we will get more clear, and how to formulate an effective hypothesis. A testable hypothesis is not a simple statement. A testable hypothesis is not a simple statement. It is an intricate statement that needs to offer a clear introduction to a scientific experiment, its outcomes. However, there are some important things to consider when building and state the problem of that you are trying to solve, and make sure that the hypothesis clearly defines the topic and the focus of the experiment. So these are two important hypotheses. One is testable and the effect of hypothesis. If you can interpret, madam. Yeah, sure, ma'am. एक हाइपोथेसिस जिससे आगे जाकर के टेस्ट किया जाना है, उसके क्या है और किस तरह से ये सब किया जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि हाइपोथेसिस के 3 रिजल्ट हमारे सामने आ सकते हैं। पहला ये कि जो हाइपोथेसिस हम लेके चल रहे हैं
वो हाइपोथेसिस हमारी ट्रू हो जाए, यानी कि जैसा जिस तरह का रिजल्ट या रिलेशन हमने दो अवयवों में, दो तत्वों में मान के चले हैं, वो हमारा साबित हो जाए। जरूरी नहीं है कि उनकी इंटेंसिटी भी वैसी हो, लेकिन एक संबंध जो है वो स्थापित हो जाए, ये ट्रू होने का चांस रहता है। दूसरा जो पॉइंट हमारे सामने आ सकता है वो ये है कि वो पूरी तरह से फॉल्स हो जाए, मतलब हमने जो माना है कि ये इस तरह का एक रिलेशन इन दो तत्वों के बीच में है, उस तरह का कोई भी रिलेशन उन दो तत्वों के बीच में हमें मिले ही ना। तीसरी चीज ये होता है कि हमें वो जो रिजल्ट हमारे सामने आया है उसके आधार पर हमें हमारी हाइपोथेसिस को दोबारा से रिप्रोड्यूस करना पड़े, दोबारा से हमें उसको पुनर्निर्माण करना पड़े, ताकि हम हमारे रिजल्ट पे और बेहतर तरीके से पहुंच सकें। तो ये तीन तरह की चीजें जो होती है वो टेस्ट की जा सकने वाली हाइपोथेसिस से रिलेटेड होती हैं। नेक्स्ट मैम, या जो एक इफेक्टिव हाइपोथेसिस, यानी एक जिसको हम कह सकते हैं कि प्रभावी हाइपोथेसिस का निर्माण अगर हमें करना है, तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। वो जो छोटी छोटी चीजें हमने बात कर ली थी कि वो छोटी होनी चाहिए, वो इफेक्टिव होनी चाहिए, और उसके अंदर सारी चीजें आ जानी चाहिए। उसी के साथ साथ यहाँ पर मैम एक और बता रही है कि एक सिंपल स्टेटमेंट के बजाय वो एक समाहित, बहुत सारी चीजों को समाहित किए जाने वाला स्टेटमेंट होना चाहिए। उसके अंदर साफ साफ ये हम लिख दें कि हम जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट क्या है, इसमें हम क्या इंटेंशन रहेगा, मतलब हम क्या चाह रहे हैं, और हम तरह के रिसर्च में किस तरह का आउटकम चाहते हैं। तो इन सारी चीजों को समाहित अगर हम कर पाएंगे तो वो एक बेहतरीन हाइपोथेसिस जो है वो हमारे सामने आ पाएगी। Okay, thank you. Now we have discussed about how to develop a good hypothesis, or how to develop hypothesis, where we have studied the good research hypothesis, importance of a testable hypothesis, and formulate effective hypothesis. And it's clearly mentioned in the sentence which we have just covered. And with all this, we have a good hypothesis. So what makes a good hypothesis? That is what makes a hypothesis. Now, there are considerations that must be taken into account in order to make the hypothesis as strong as possible. And the first one is it must be possible. It must be possible. This means that the hypothesis should be a possible answer for your query, and you would like to find out if it's true. If you already know that the start, that if you already know from the start that it is or it is not possible, then it would not be considered possible, and it would not stand as a good hypothesis, as it defeats the testing process. The next is it must be a proposition about relationships that exist in the real world. And here, this means that the hypothesis must propose a relationship that is real and thus able to be tested. That is, it should not be contrived, forced, artificial, or unnatural. Example, I will give you a small example to this. Temperature in areas near to a special room is higher. This would not be a good hypothesis. No real relationship between types of classroom and temperature. Although the types of surface or material used for the building will have to impact on temperature, there is no real connection to the usage of the rooms or type of classroom unless students' intention is to study the type of material used or type of service. Then the hypothesis must be phrased to capture the focus on type of service or materials used. As such, this hypothesis would not stand as a good hypothesis, as it would not be testable if the relationship is not real. The third is it must have clearly defined conclusion, specifies the relationship between the variables. This means that it must be clear
of how one variable would affect the other, so that we will be clear in what data to collect and what we want to study or test. Example for this is areas near to concrete buildings experience higher temperature. Here the hypothesis states clearly that near the distance from concrete building, the higher will be the temperature. And the fourth point is it must be falsifiable. And here, this means it is able to be empirically tested, can recall data to prove, and the data collected can either prove or disprove the hypothesis. So your statement may be true or untrue. And next, consistent. This means that it must be proving that it claims to be proving and must not contain any logical or analytical contradiction. Here, there is relationship between the two variables, that is, type of surface and temperature. However, this hypothesis is not logical, as it should be the type of surface causing temperature to vary and not the other way around. As such, you will not be able to test. So there are, for good hypothesis, there are two criteria for good hypothesis, and one is the hypotheses are statements about relationship between variables, and number two, that is the hypothesis carry clear implications for testing the stated relationship. These criteria mean that the hypothesis statement contains two or more variables that are measurable or potentially measurable, and that they specify how variables are related. So before we go to the character, if you can kindly explain, ma'am. Yeah, ma'am, please. मैम यहाँ पर बताना चाह रही हैं कि एक अच्छी हाइपोथेसिस बनाने के लिए वो उसमें क्या-क्या गुण होने चाहिए। तो सबसे पहली बात यहाँ पर मैम रख रही है कि इट मस्ट बी प्लॉजिबल। प्लॉजिबल मतलब होता है कि उसको हम किसी भी तरीके से प्रूव कर सके या उसको साबित किया जा सके, ऐसी कोई चीज होना वहां पर जरूरी है। दूसरी चीज यहाँ पर ये कह रही है कि जो भी रियल वर्ड है, जहाँ जिसके ऊपर रिसर्च वर्क किया जाना है, उस रियल वर्ड के साथ उसका कोई ना कोई एक रिलेशन क्लियर कट होना चाहिए। यहाँ पे मैम ने एग्जांपल लिया कि एक रूम के अंदर जाने पर वहां का तापमान बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैम ने ये स्पेसिफिकली बताया कि सिर्फ ये बता देना कि रूम है और तापमान का बढ़ना है, वो किसी भी हाइपोथेसिस के लिए सही नहीं है, बल्कि वहां पर आपको सरफेस, वो जिस मटेरियल से वो रूम बना हुआ है और कितना तापमान बढ़ता है, इन दोनों के बीच का रिलेशन यहाँ पर बताना जरूरी है। तीसरी चीज इन्होंने कही कि कंक्लूजन और स्पेसिफिक रिलेशनशिप जो है वो बताया जाना चाहिए। जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि कंक्रीट जो रूम्स होते हैं उनमें टेम्परेचर जो है वो हाई रहता है, तो वो चीज यहाँ पर इस थर्ड वाले पॉइंट पर लागू होती है। चौथी चीज, इस मस्ट बी फॉल्सिफिएबल, यानी आंकड़ों के आधार पर ऐसा भी होना चाहिए कि उसका नेगेटिव आंकड़े भी आपको मिले। यूनिवर्सल ट्रुथ जो जितने भी होते हैं उन पर अगर रिसर्च की जाती है तो वो एक अच्छी हाइपोथेसिस के द्वारा ना तो बन सकती है और ना वहां पर हो सकता है। जैसे अगर हम सिर्फ ये ले लें कि सर्वत्र वायु जो है वो विद्यमान है, तो ये फॉल्सिफिएबल नहीं रहेगा और इस तरह के हाइपोथेसिस से हमें बचना चाहिए। लास्ट मैम ने ये कहा कि सभी चीजों को अपने अंदर समाहित करते हुए हाइपोथेसिस का निर्माण होना चाहिए। शॉर्ट में मैम ने दो चीजों को मेन बेस बनाया है कि एक अच्छी हाइपोथेसिस में ये दो चीजें तो समाहित होनी ही चाहिए। पहली चीज इन्होंने कहा कि ये एक वाक्य होना चाहिए और इस वाक्य के अंदर किन्हीं भी तत्वों के, जिनके ऊपर हम अध्ययन करना चाह रहे हैं, उन तत्वों के रिलेशनशिप की बात होनी चाहिए, यानी ये एक दूसरे से रिलेट होते हैं या नहीं होते हैं, ये चीज यहाँ पर होना चाहिए। और दूसरी चीज
वो जो इनका रिलेशनशिप है इनके बीच की, वो टेस्टेबल होना चाहिए। मतलब उसको हम टेस्ट किसी भी मेथड के जरिए, चाहे वो साइंटिफिक हो, स्टैटिस्टिकल हो, मैथमेटिकल हो, किसी भी उसके जरिए हम इनको टेस्ट कर सकें। तो ये दो चीजें जो है वो यहाँ पर एक अच्छी हाइपोथेसिस की निशानी मैम ने बताई। Okay, thank you. For a good characteristic, for a good hypothesis, we have to have this characteristics. Now, the first is it is never formulated in the form of a question. It should be empirically testable, whether it is right or wrong. We are just trying to simplify in a better, simple way. It should be specific and precise. It should not be contradictory. It should specify variables between which the relationship is to be established, and it should describe one issue only. A hypothesis can be formed either in descriptive or relational form. It does not conflict with any law or nature which is known to be true, guarantees that available tools and techniques will be effectively used for the purpose of verification. It should be stated as far as possible if in most simple terms so that the same is easily understandable by all the concerns. It must explain the fact that give rise to the need for explanations. It should be amenable to testing within a reasonable time. Therefore, a workable or usable hypothesis would be the one that satisfies many of the following above criteria. So if you can kindly interpret this, madam, this is the characteristics of a good hypothesis. किसी भी अच्छी हाइपोथेसिस की जो विशेषताएं हैं उनको समाहित करते हुए एक तरह से मैम जो है वो लेक्चर का जिस्ट यहाँ पर बता रही हैं कि इस अच्छी हाइपोथेसिस के अंदर निम्नलिखित विशेषताओं का होना बहुत जरूरी है, और एक एक करके उन्होंने यहाँ पे लिखा है। सबसे पहली चीज उन्होंने बताई है कि ये क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन के फॉर्म में तो ये रिसर्च क्वेश्चन की तरफ चली जाएगी। ये एक स्टेटमेंट होना चाहिए, और स्टेटमेंट के अंदर चाहे वो स्टेटमेंट सही जाए या गलत जाए, लेकिन वो टेस्टेबल होना चाहिए, मतलब उसे हम टेस्ट कर सके, इस फॉर्म में होना चाहिए। तीसरी चीज बता रही है कि वो जो स्टेटमेंट है वो बहुत स्पेसिफिक हो, छोटा हो। चौथी चीज, उस स्टेटमेंट की आपस के अंदर कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन ना हो, मतलब पहले स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में अगर हम किन्हीं दो तत्वों के बीच का कोई रिलेशन बता रहे हैं तो वही हम स्टेटमेंट के एंड में ये ना बता दें कि इन दोनों तत्वों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो हमें जो फॉर्मुलेट करनी होती है हाइपोथेसिस, वो एक ही लाइन पर मैम ये बता रही हैं कि ऐसे वेरिएबल्स होने चाहिए जिनके मध्य संबंध स्थापित करना संभव हो। ये इसी तरह के वेरिएबल्स को लेकर बननी चाहिए। इसके बाद इन्होंने बताया कि एक पॉइंट को लेकर के उसी पर ही हाइपोथेसिस बनाई जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही हाइपोथेसिस के अंदर हम मल्टीपल इश्यूज को शामिल कर लें। अगर मल्टीपल इश्यूज है तो मल्टीपल हाइपोथेसिस वहां पे बनाई जा सकती हैं। इन्होंने ये भी कहा कि जो लॉ ऑफ नेचर है, मतलब ग्रेविटी से रिलेटेड अगर कोई लॉ बन रहा है तो हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके अगेंस्ट जाकर के हम कोई भी हाइपोथेसिस क्रिएट ना करें। इसके बाद इन्होंने कहा कि ऐसी हाइपोथेसिस होनी चाहिए जो वर्तमान में उपस्थित टूल्स और टेक्निक्स के द्वारा टेस्ट की जा सके, वेरीफाई की जा सके। इसके बाद इन्होंने बताया कि ये बहुत ही सिंपल तरीके में होनी चाहिए और अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। जो व्यक्ति रिसर्च को नहीं कर रहा है, उस रिसर्च को, वो भी अगर हाइपोथेसिस पढ़े तो उसे पता होना चाहिए कि आपकी रिसर्च में क्या है। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि ये हाइपोथेसिस जो होती है वो आपके टॉपिक को एक्सप्लेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए। और लास्ट में इन्होंने बताया कि रीजनेबल टाइम के अंदर आप उस हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकें, इस तरह से वो हाइपोथेसिस बननी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि 2122 के अंदर इस तरह की संभावनाएं हैं, तो वो हाइपोथेसिस जो है वो आपकी रीजनेबल टाइम में टेस्ट नहीं की जा सकेगी, उसे हम एक अच्छी हाइपोथेसिस नहीं मानेंगे। ओवर टू यू मैम। Now, that is the characteristics of a good hypothesis, and within this, let us try to give some importance to some of the points.
hypothesis should be conceptually clear. That is what we have shared upon in the previous slide. And here we will just try to summarize in a very small, clear manner. The concept used in this hypothesis should be clearly defined, not only formally, but also, if possibly, operational. And the next hypothesis should be specific, which no vague or value judgmental terms should be used in formulation of the hypothesis. Hypothesis should be empirically testable. That is what we have been discussing all around this topic. It should have empirical reference so that it will be possible to deduce certain logical deduction and inference about. And we have hypothesis should be related to available techniques. So researchers may ignorance of the available techniques makes him or her weak in formulating a workable hypothesis. So this is also one of the important thing. Hypothesis should be related to a body of the theory or some theoretical orientation. So a hypothesis, if tested, helps to qualify, support, correct, or refute an existing theory only if it is related to some theory or has some theoretical orientation. So if you may kindly interpret, madam. Hello. Yeah. Yeah, ma'am. Yeah. Am I audible? Yes, ma'am. Good hypothesis की कुछ characteristics यहाँ पर बताया कि कॉन्सेप्चुअल क्लियर होना चाहिए, यानी कि हम अपने रिसर्च में क्या करने जा रहे हैं ये कॉन्सेप्ट वाइज अगर हमारा क्लियर होगा तभी हम एक बेहतरीन हाइपोथेसिस जिसमें पर्टिकुलर उस कॉन्सेप्ट को डाल पाएंगे इसे रख सकते हैं। दूसरी चीज ये कि हाइपोथेसिस वेग नहीं होनी चाहिए। वेग का मतलब होता है कि एक वृहद एरिया को लेकर के हमने एक बिना किसी आधार वाली हाइपोथेसिस बना ली तो वो नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही जिसका हम टेस्ट कर सके, जो भी नोन हमारे पास में टूल और टेक्निक्स हैं उन सारी चीजों को लेते हुए हाइपोथेसिस बनाई जानी चाहिए, क्योंकि लॉजिकल कुछ ऐसी चीजें तर्क के आधार पर हमारे सामने आती हैं कि उनको हम हाइपोथेसिस की टेस्टिंग के काम में ले सकते हैं। तो ये चीज हमारे पास अवेलेबल हो तभी वो हाइपोथेसिस के हमारी जो है वो एक बेहतरीन हाइपोथेसिस बनेगी। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाइपोथेसिस के बारे में ये है कि हम उसको जो भी टेक्निक हम आगे अपने रिसर्च में काम में लेने वाले हैं, अगर हम उसको अपनी हाइपोथेसिस के साथ में जोड़ लेते हैं तो हमारी जो अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ये माना जाएगा कि रिसर्चर को अभी तक जिस तरह की मेथोडोलॉजी या मेथड्स में लेने वाला है अपनी रिसर्च में उस चीजों के बारे में जानकारी नहीं है। तो उन चीजों को अवॉइड करते हुए छोटा सा रिसर्च वर्क करने के बाद में हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना चाहिए। और इसी तरह से हाइपोथेसिस जो है वो इस तरह की हो कि उसको करेक्ट किया जा सके वापस से। अगर रिसर्च छोटे से रिसर्च के बाद ये पता चले कि हाइपोथेसिस में कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो उसको रिफाइन किया जा सकना चाहिए, करेक्ट किया जा सकना चाहिए। जितना भी हमारे पास बेस्ट नॉलेज है उस समय तक उसके आधार पर इसको रीडिजाइन किया जाना चाहिए। मैम। Yeah. Thus, a hypothesis may originate from a variety of sources, in isolation or in combination with another. However, in spite of these fertile sources of hypothesis, it is not easy to formulate a usable or workable hypothesis. It is often more difficult to find and formulate the problem than to solve it. If a researcher succeeds in formulating a hypothesis, he can assure that it is half solved. While formulating a hypothesis, researcher has to keep in mind or keep reminding that he has to formulate tentative proposition in such a way that it becomes usable in systematic study. If you can kindly interpret. Yeah, ma'am. Translate. मैम अपने पूरे लेक्चर के बाद में यहाँ पर ये बता रही हैं
कि एक हाइपोथेसिस जो हो वो चाहे वैरायटी ऑफ सोर्सेस से बनाई गई हो, यानी विभिन्न स्रोतों को काम में लेके बनाई गई हो, या किसी एक स्रोत से बनाई गई हो, या उसके अंदर बहुत सारी चीजों को शामिल करके उसे बनाया गया हो, बनाया जा सकता है। लेकिन इन सारी चीजों के बाद भी इतने सारे अध्ययन के बाद भी आसान नहीं होता कि हम हाइपोथेसिस को एक फाइनल हाइपोथेसिस को तैयार कर सके। तो इसके बजाय ये होना चाहिए कि वर्केबल हाइपोथेसिस जो है वो तैयार की जानी चाहिए। इसी के साथ ही ये भी डिफिकल्ट होता है कि हम किसी एक प्रॉब्लम को, उसकी सॉल्यूशन को पहले से ही सोच लें, क्योंकि हम जब रिसर्च कर रहे हैं तो हम उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए रिसर्च कर रहे हैं, तो फाइनली उसका पहले से ही पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर हमने जो हाइपोथेसिस बनाई है उसके आधार पर हम उसे काम करते हुए चलें, तो हमारी प्रॉब्लम पहले से आधी सॉल्व हो जाती है, अच्छे से हमारा वो वेल बिगिनिंग हो जाता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि एक टेंटेटिव जो रिसर्च में हमें जो टेंटेटिव मिलना है उस वो अपने दिमाग में पहले से रखें और हाइपोथेसिस उसी हिसाब से डिजाइन करें, तो हमारी पूरी स्टडी जो रहेगी, पूरा रिसर्च जो रहेगा वो बहुत सिस्टमेटाइज्ड रहेगा। मैम, इट्स नियरली 6:05. Yes. So this is the it's almost concluding. I thought I would give you 7 points, last point, conclusive conclusion of the formulation of hypothesis. Is it all right? Yeah, ma'am. Or is it okay? Yeah, ma'am. Okay. I have 7 points for the conclusive. Here, this is conclusively, I want to give some hints for the formulation of the hypothesis. Number 1, be sure to read on the topic to familiarize yourself with it before making a final decision. You need to make clear certain that the topic is researchable in an interdisciplinary sense. Meaning that there is sufficient published materials on the topic in the legal literature and in the literature of a second or possibly the third discipline to write. Number 2, as noted, a research hypothesis is more than just a topic. It is two element variables that are in relation to each other. Remember that within the word hypothesis is a word thesis. Your thesis is what you propose to prove or by your research. As a result, your research, you will arrive at a conclusion, a theory, or understanding that will be useful or applicable beyond the research. And number 3, avoid judgmental words in your hypothesis. Value judgments are subjective and are not appropriate for a hypothesis. You should strive to be objective. Therefore, the use of personal opinion is to be avoided. Number 4, your hypothesis must involve an issue or question that cannot be answered exclusively by the discipline of law. You should try to limit your inquiry to the literature or to the literature of 2 or 3 disciplines. It is best to choose a hypothesis where you already have some level of familiarity with the disciplines that are more relevant to the topic. Number 5, be sure that each term in your hypothesis is clearly understood and defined. Do not deal in generalities or assume that the readers knows the meaning of a technical term. Number 6, specify, if appropriate, whether you will be dealing with state or federal law or both on a comparative basis if appropriate. And finally, know that your hypothesis may change over time as your research progresses. You must obtain your supervisors or professors' approval of your hypothesis, as well as any modification of your hypothesis
before proceeding with any work on the topic. You will be expressing your hypothesis in 3 ways. First, as a one-sentence hypothesis. Second, as a research question. Third, as a title for your research paper. Your hypothesis will become part of your research proposal. So that is the conclusion of formulation of hypothesis. If you can translate, ma'am. Thank you, ma'am. Yeah. मैम ने अपने आज के उद्बोधन का अंत करते हुए और कंक्लूजन के तौर पर 7 विभिन्न और इन 7 पॉइंट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो निकल के सामने आई वो अलग अलग पॉइंट्स को नहीं बताते हुए मैं सबको समाहित करते हुए यहाँ पर फटाफट कंक्लूड कर रही हूँ कि जब भी हाइपोथेसिस बनाई जाए तो वो वैल्यू फ्री हो, आपकी अपनी बायसनेस, आपकी अपनी ओपिनियन जो है वो उसके अंदर नहीं आए, ताकि एक बेहतरीन रिसर्च जो है वो सामने निकल के आए। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि जब ये इंटरडिसिप्लिनरी अगर हो तो इसका ज्यादा यूज जो है वो सारे डिसिप्लिन को मिल जाता है। तो हमारा रिसर्च इंटरडिसिप्लिनरी होना चाहिए और जो हमारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर हो वो भी हर एक डिसिप्लिन से हो, और जहां से किसी भी डिसिप्लिन से जब हमें बेहतर हाइपोथेसिस बनाने के चीजें मिले तो हमें वो ले लेनी चाहिए, हमें स्टिक नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज हमारे अपने डिसिप्लिन से रिलेटेड उसके अंदर चीजें होनी चाहिए, क्योंकि हम अगर पीएचडी जिस डिसिप्लिन के थ्रू कर रहे हैं अगर उसमें वो चीज गायब रही तो हमारे उसके ऊपर रिसर्च के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लेटर ऑन लग जाता है। इसी तरह से रिसर्च क्वेश्चन के तौर पे ये चीज हो सकती है, एक हाइपोथेसिस के रूप में हो सकती है, ऑब्जेक्टिव के रूप में भी हो सकती है। तो इन सारी चीजों को जो मैम ने अपने लेक्चर में बताया उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक बेहतरीन हाइपोथेसिस जो है उसका निर्माण किया जा सकता है। अंत में a very heartfelt thank to ma'am. You spare time for us, and it is really that kind of topic which is less understood by all the researchers, but it is must it should be the one of the most understandable kind of topic. So thank you so much, ma'am. And now it's because there are we are late enough and no need of summary, क्योंकि साथ के साथ summary होती गई, तो मैं अब जेडी सर को move on करने के लिए कह रही हूँ। Now it's over to you, JD sir. Renu ma'am, if you have few questions, then please go ahead. Yeah. Hello, sir. Yes, ma'am. Yeah. If there are enough questions, then if it will be good if the query comes through email, since we are running out of time. Okay. Yeah, I can accept the email queries. Yeah, fine. That we can do. Yeah, that would be so nice. Only one question I'm taking here, and then we will give your email. The Chaya Hardia, she wants to ask that how can know which type of hypothesis, scientific or workable hypothesis is useful for our research. Scientific. I mean, it's very simple. She's just asking that what kind of hypothesis we should choose for our research. Yeah. So depending upon our social studies or depending upon the scientific study, today is mostly on our social sciences, the study of social science. So our research may both scientific as well as workable hypothesis, because it has in both we find exploratory hypothesis, exploratory testing hypothesis. So both will be relevant. That depends on how the student or how the scholar chooses the topic. Thank you, Professor Wangshimenla Jamir. You accepted our invitation for delivering a lecture on a topic which is really very difficult to wrap up. So we are really thankful to you. I'm really thankful to Renu ma'am also that she has taken a new initiative for today's lecture. And on this day when we are celebrating Hindi Divas today,
So you have done a great job for all people who are really loving Hindi. So I'm really very, very thankful. And entire team is really thankful to you, ma'am, that you have made it bilingual. And for the formal vote of thanks, I request Mausam Babel. Mausam Babel will give the formal vote of thanks. Good evening, everyone. I, Mausam, Assistant Professor Engineering, Government Engineering College, Jhalawar, on behalf of the organizing committee, extend my sincere thanks to the speaker, Professor Jamir, for such an informative lecture on the topic formulating hypotheses. Her lecture was so vibrant and well informed, and it provided the basic understanding of the formulation of the hypothesis and its type in research. Thank you, Professor Jamir, for accepting our invitation and enlightening the participants. We are grateful to you. I also extend my thanks to Dr. Renu Punya ma'am for such an apt Hindi translation. And further, I also thank patron, co-patrons, and the mentor of this program for their constant support and motivation since the beginning of this course. I would also like to thank the conveners, Dr. Jitendra D. Soni sir and Dr. Ravindra Kumar sir, and the organizing secretary, Dr. Omkar Seni sir, for organizing this wonderful orientation course and their endless motivation to the participants as well as the organizing committee. And any such program is incomplete without the participants. So I also extend my thanks to all the participants for their active participation and composure throughout the session. I would also like to thank Dr. Monica and Renu Bagaria for presenting the report of the previous sessions. At the end, I extend my thanks to the organizing and technical committee, which is working in the background to make this program a success. I hope you all have enjoyed today's session, and the next session will be organized on Saturday, 19 September. The speaker will be Dr. Rathish Kumar, Assistant Professor, School of Social Sciences, JNU, New Delhi, who will be speaking on literature review and textual analysis. See you all on Saturday. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Mausam. And now, ma'am, with your due permission, I am just ending the meeting. Okay, thank you so much. Thank you to see you all, and I hope this was a fruitful talk. Thank you. Bye-bye.